Good afternoon, everyone. After the vibrant interactive panel discussions, कुछ जरूरत है किसी को सुनने का? हाँ, सीधा लंच तक ले जाना चाहिए था पूजा सब लोगों को. हाँ, I was just eagerly listening one after one, and most of the thought process I think presented in a manner which actually some way they try to script the futures of education or even the present education systems of the country. Now, if we really want to discuss upon the future of global educations and how India is going to position our education system, I think my first answer to this question is very much with the new national education policy. The vision document is very much enlightened us with what we are supposed to do. Now, question is how? That strategy individually we have to focus upon based on the context. A prescriptions of freedom, autonomy, if that can be institutionalized, I think someone talk about the regulator's purpose. I think then there is absolutely no requirement of any regulator presence. I completely agree with the gentleman because whenever there is a regulator means lot of pressure. और प्रेशर थ्योरी अगर किसी भी साइंटिस्ट का थ्योरी लाए तो उसमें ब्रेन का जो ग्रोथ होना है वो somewhere suppressed रहता है या it takes the other route altogether. Now, one way we are talking about holistic education system, जो मैडम ने पूछा है whether म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, आर्ट इंटीग्रेशन है, बिल्कुल है. लेकिन when it is driven by AI like exam systems, I think that creates again a lot of pressure. Parents misled इसलिए हो रहा है. So system में हम लोग बोल रहे हैं क्लास 10th, क्लास 12th, followed by पहले maybe just before 5 years of our UG program, maybe last part 2 का एग्जाम्स होते थे यूजी प्रोग्राम में अदर देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस. पार्ट 1 कॉलेज अपने लेवल पे कर लेते थे. यूनिवर्सिटी यूज्ड टू कंडक्ट द पार्ट 2 एग्जामिनेशंस एंड फॉर द ऑनर्स स्टूडेंट पार्ट 1 also they used to conduct. Now question is, when exam led education systems is actually being conceptualized by Indian community, then it is very difficult to bring new ideas in the pocket. Now, how to get rid? So I was just referring the autonomy. Now, school board, although we are taglined with this regulator, but there is a autonomy. Autonomy of curricular transaction. Now, कभी-कभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक करिकुलम नामक वस्तु का साथ कंफ्यूज्ड हो जाता है. Curriculum structures gives enormous autonomy to entire system. Now, context-sensitive transactions model, a individual teacher should get the freedom. उसको अगर syllabus completions करने का नाम पे exams का preparations करना है, then all our schools, college and university still following the colonized prison model. We are talking about education 4.0 or 5.0, but if we tag this industrial 4.0 and try to crystallize the structures of education's delivery mechanisms,
only for their requirement, I think then whole purpose somewhere like shell life bana denge hum log. Whether we really want this. Now, future of global educations and India at 2030, India at 2047, or India at 2050, थोड़ा आगे. Because populations जो है वो यहाँ पे है और बगल वाला चाइना में है. If we look into the OECD literature, they talk about education industry is at present, it is close to $3 trillion economy. So that means global education industry को अगर हम इकट्ठा देखेंगे तो एक $3 trillion economy है. Now participation model, collaborative models, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, but in silos, काम in silos होता है. तो फ्यूचर एजुकेशन वन वे जो पैंडेमिक हमको दिखाया है, द एजुकेशन डिलीवरी मैकेनिज्म थ्रू यूट्यूब और एनी अदर टैग बेस्ड प्लेटफॉर्म, उस टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए तो अच्छा है, बट इट बिकम्स ए प्रैक्टिस राइट एट दिस मोमेंट, एंड दैट्स व्हाई द edtech कंपनीज आर नाउ कमिंग अप विथ, आई मेट सम यंग एंटरप्रेन्योर लेडी, शी इज हैंडलिंग the dances, all kind of Indian classical dances in one platform. So आप एकदम जीरो लेवल से क्लासिकल डांस का अगर आपको दैट ग्रेजुएशन लेवल तक जाना है या एक्सपर्टाइज मास्टर लेवल तक जाना है, you can learn from the platform. Now question is, फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एजुकेशन में क्या स्कूल कॉलेज कुछ नहीं रहेगा? सारे चीज वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हो जाएगा. आजकल तो सारे दुनिया भर में मेटावर्स का बात हो रहा है, एंड पीपल्स आर आल्सो ट्राइंग टू सिक्योर ए प्लेस इन दिस मेटावर्स, वेदर इन द लाइन ऑफ मीडिया एडवर्टाइजमेंट और एजुकेशन डिलीवरी मैकेनिज्म्स. नाउ क्वेश्चन इज नॉट दैट. क्वेश्चन इज how we can be really placed ourselves, because I know many of the educationists sitting in front of me, they are real practitioners, and every day in their campuses they try to innovate something new. But my humble request, those who are from the schools in the K-12 sector, give the enormous freedom to early childhood educators, to especially class 8. The gentlemen who are talking about adaptive learning, I think वो freedom बच्चों को अभी मिल नहीं रहा है, selective pockets में मिलता है. And gradually, if we can really convince the parents, अभी सब parents तो अच्छा है, हम लोग भी parents हैं, तो एक दिन मन का बात का ट्यून से तो ट्यून नहीं हो सकता है. It's a gradual process. Again, I am referring some other gentlemen. It's the education process is actually 3 generations. आज शुरू हुआ तो 3 generations का बाद वो stabilized होगा. Real educate. आजकल फ्यूचर ऑफ एजुकेशन का संदर्भ में और एक चीज मैं बोल रहा, बहुत सारे एजुकेटेड क्लास, अगर आप सोशल मीडिया का उनका कमेंट, पर्सनल कमेंट पढ़ेंगे किसी विषय वस्तु में और वीजा वीज उनका प्रोफाइल देखेंगे, तो किसी ना किसी जगह पे एजुकेशन का जो डिग्री है वो किसी सॉल्टी वाटर में अपने विसर्जन देके वो कमेंट कर रहा है. यू लुक इनटू द सोशल मीडिया, be any platform, Instagram, Meta, or any platform, any controversy happens, how people react. तो मैं घर पे कभी कभी मजाक में बात करता हूँ, they are definitely educated, but they are still in the first generations. बिल्डिंग बना लिया है लेकिन राजा का हार्ट नहीं आया है, तो वो लाने के लिए आई थिंक फ्यूचर एजुकेशन शुड फोकस ऑन these areas.
Second component I would like to highlight how inclusivity in the education systems we can really gear up. In India, if we look into the Education Ministry's website, especially in the primary level, how many CWSN students are enrolled vis-a-vis if we compare with the secondary level or senior secondary level and data related to higher education, it is a complete mismatch. So that means some way we as a system try to compel the parents of CWSN to pull out their kids from the regular education system. बड़े बड़े बात करना बहुत आसान है, करके दिखाने के लिए I think we need to focus upon. So our wish list from the organization, how we can gear up so that every child is equal. The equity, a key word, is very much focused in new education policy. So the future of global education must focus upon equity, freedom, and other is safety of the child and safety of the institute. I think if these few areas we can cover, many people, I know you all are nowadays this AI, ML, cloud computing, quantum computing, these are all buzzwords. Process में आएंगे जाएंगे, but readiness, future readiness is very much. Now all these big organizations are coming to K-12 sector. Is it a business model? Now, principal are asking this question to me, to my colleague. Always it is not a business model because the industry requirement and innovative thinking, जैसे हम लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, अगर इनोवेटिव थिंकिंग का क्वेश्चन कुछ या स्टिक्स या कुछ सैंपल क्वेश्चंस पेपर लाएंगे, बहुत सारे लोग हम पीछे रहेंगे बिकॉज वो लैटरल थिंकिंग वाला जो कुछ सिलेक्टिव लोगों का पास डेफिनेटली होगा, बट एवरेज सब लोगों का पास नहीं होगा, लेकिन बच्चों में वो क्षमता है. सो एज ए ऑर्गेनाइजेशंस, as a part of the different body, how you can really protect this kind of sentiment in the ecosystem, that would be the requirement of the future global education. My last point is, of course, towards fitness and sustainability. Without that, parents, school management, स्कूल में बहुत सारे एसडीजी पोस्टर लगाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑल्सो, बट इट इज फुल्ली एयर कंडीशन. नो वन वे इट इज फुल्ली एयर कंडीशन एंड अदर वे कार्बन एमिशंस को कमाने का बात कर रहा है. ये थोड़ा मेरा मतलब हार्ट और ब्रेन में गैप बढ़ जाता है. हाउ टू वर्क ऑन दिस एजेंडा? एसडीजी 5.0 और कुछ एसडीजी 9.0 कुछ ऐसा भी चीज आएंगे, बट वेदर इट इज ए पोस्टर वर्क और डेफिनेटली दो स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटिंग एंड पेरेंट्स भी प्राउडली फेसबुक में पोस्ट करते हैं, मेरा बच्चा ने एसडीजी का ऊपर ये किया है, बट एयर कंडीशन चार्ज का एडिशनल फी भी पकड़ाते हैं स्कूल मैनेजमेंट को. आई थिंक वी नीड टू रीलुक ऑन दिस एजेंडा. रियल सस्टेनेबल अगर करना है तो ग्रीन स्कूल, ग्रीन यूनिवर्सिटी, ग्रीन कॉलेज, दैट कॉन्सेप्ट्स को स्लोली अपनाना पड़ेगा. देन कंजम्पशंस ऑफ वाटर एंड फॉसिल फॉयल एंड अदर थिंग्स, मेरा ख्याल से अगेन जो कुक्ड ऑयल है उसको हमको समय देना पड़ेगा. आई थिंक टाइम इज, मैं और समय नहीं लेना चाहता हूं. एंड अनदर लास्ट पॉइंट इज फिटनेस. तो इंडियन ट्रेडिशनल जो एपेटाइट या जो भी रेसिपी है, हाउ कल्चरली एंड एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन से ये रेसिपी सदियों से आ रहा है.